Hello everyone, welcome back. If you are preparing for the NET economics exam, then today's video is going to be extremely important for you because questions on books by various economists like Adam Smith, Keynes are asked again and again in this exam. ईयर 2022 से लेके लास्ट ईयर तक के एग्जाम पेपर एनालिसिस से मुझे ये समझ में आया है कि एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस बुक कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड पेपर 2 इकोनॉमिक्स में ज़रूर आते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन स्कोर डायरेक्ट मार्क्स थ्रू द PDF दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स की जो पहली बुक थी वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर थी? नहीं, उसका टाइटल था इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस. ही रोट इट इन द ईयर 1930. इन दिस बुक इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, Keynes provided an in-depth analysis of the Indian monetary system. His book mainly focused on issues related to the Indian currency and financial situation during the British colonial period. इसी तरीके के बुक रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नेट एग्जाम में हमेशा से आए हैं एंड इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं. सो I have made this task easier for you and prepared an entire list. I know it's difficult for many of the students to remember the names and contributions of books by various economists, especially by classical economists, Keynesian economists, international trade thinkers and Indian economists. So I have made this task very easy for you. I have prepared an entire list of important books by different eminent economists that could be asked in the exam. In this PDF list, I have mentioned the name of the economists, their book contributions and also the key features of their books. So you will have a ready revision list that will help you score directly in the exam. So if you want the PDF, you need to simply comment down below notes and I'll share the PDF with you. All the best, bye. Don't forget to subscribe me for more updates and videos coming soon.